Delhi, the national capital, has many identities: historical, political, and cultural. But modern cities sometimes have some distinct identities as well. Transport systems can also define a city's character. ट्रेनों में क्या होता है कि भाई कई लोग ऐसे खून से बढ़कर रिश्ते बन जाते हैं। 30 से 40 हज़ार जो पैसेंजर्स पलवल से लेके और दिल्ली तक चलते हैं। Mumbai has the local train which embodies the city's daily resilience. Kolkata's tram and taxis display the old world romance on modern streets, while Kochi's water metro connects the people with both the mainland and the surrounding islands. But what about Delhi? Delhi too has a public transport network that is cheap, has a broad range, and connects it to the national capital region and is still used by many people. But why then hasn't the Suburban rail service defined Delhi's character as its metro service has? बाथरूम की सुविधा, सफाई की सुविधा, कोई ट्रेन ऐसी जिसमें मोबाइल का चार्जर नहीं लगता है ही नहीं पूरे डब्बे के अंदर। आधे आधे दिन बैठे रहते हैं, लौट के घर चले जाते हैं। हम लोग लेडीज डब्बे में सुरक्षित नहीं है। Down to earth, travel to the suburban train stations in and around Delhi to find out the current status of this transportation service and its role and impact on the everyday travelers. To understand the current descent of the suburban railway systems into decrepitude, an overview of the need for a suburban railway system is necessary. DTE interviewed A.K. Jain, a former TDA official, to understand the growth of the city and the need for a robust public transport. So the NCR plan and Delhi master plan both said very unanimously that for development of Delhi in a planned manner, balanced manner, we should have a larger perspective and provide fast transit system, public transit system between the NCR and Delhi. The master plan of Delhi 2021, which was prepared in consultation with the NCR Planning Board, proposed several corridors for ring railway and the radial railways in the NCR. The transport policy outlined in the Delhi Master Plan 2021 lays down 7 primary objectives to ease Delhi's traffic woes. They include an 80-20 modal share favouring public transport by 2021, a reduction in vehicular emissions, affordability and efficiency of movement of people and goods. To achieve these results, one of the points outlined is to expand and strengthen the ring railway and the suburban rail system. Before the arrival of the suburban train in 1955, commuters from the nearby suburbs had to rely on express trains to reach Delhi. But in 1955, Delhi saw its first suburban train. It was a shuttle with 3 bogies which left New Delhi station at 7:20 am for Vinayanagar, which is now Sarojini Nagar. More than half a century later, the suburban railway network has considerably expanded and covers 46 stations in and around Delhi's regions and connects UP and Haryana to Delhi. Balkishan is a commuter cum activist in Palam who has been using the rail service for almost 3 decades. देखिए, मैं दिल्ली रेवाड़ी रूट पे सन 90 से चल रहा हूँ, सन 90 से। उस वक्त है जो मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, छोटी लाइन, आज ब्रॉड गेज लाइन है। देखिए, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो किराया है, आज हमारा पालम से पुरानी दिल्ली 100 रुपये मात्र है। 100 रुपये हमारा मासिक पास बन जाता है। वहीं अगर बस से जाते हैं तो बाबूजी 50 रुपये तो वो टिकट है आने जाने का, 25 का, 10-5 का किराया, 70 रुपये एक दिन का। गाड़ियाँ अब लेट लतीफ़ होने लगी। क्यों? वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे देश के अंदर, पटरियाँ चेंज हुई जा रही है स्पीड बढ़ाने के लिए। उन्हें ब्लॉक दिया जाता है, घंटे 2 घंटे हर जगह छोटे स्टेशन 10-15 मिनट रोकते हैं तो गाड़ी 2 घंटा लेट हो जाती है। जबकि मात्र गाड़ी का 2.5 घंटे का सफ़र है दिल्ली टू रेवाड़ी।
बाथरूम की सुविधा, सफाई की सुविधा, कोई ट्रेन ऐसी जिसमें मोबाइल का चार्जर नहीं लगता, है ही नहीं पूरे डब्बे के अंदर। रात को हम ट्रेन में आते, लाइट ही नहीं है, पानी नहीं होता, मल मूत्र भरा रहता। Another activist, Prakash Mangala from Palwal, narrates the problems that the people of Palwal face. कोरोना काल से हमारी पहले 24 जोड़ी ट्रेनें चलती थी पलवल से, और आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 12 ट्रेनें हैं जो जाती और आती हैं, और ज़्यादातर गाड़ियां हमारी लेट होती हैं। उससे क्या होता है कि जो बेचारे नौकरी पेशा वाले हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत लेट पहुंचते हैं। इसका ट्रेन का टाइम तो बहुत कम है, 1 घंटा 10 मिनट है, लेकिन 2.5-3 घंटे में ट्रेन उतारती है यहाँ। जैसे आपका अगर ये लोकल छूट जाए तो फिर आप कैसे जाते हैं तुगले के बाद? अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं। उसमें महीने का कितना पेट्रोल लग जाता है मोटरसाइकिल? महीनों में लग जाए और 6,000 रुपया को। गर्मी की वजह से, लेट की वजह से दूध फट जाता है, खराब हो जाता। For women, the problem is compounded, affecting not only their commute but also their professional and familial lives. मेन हमारे साथ समस्या यही है कि हम लोग लेडीज़ डब्बे में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जेंट्स चढ़ते हैं वो बदतमीज़ी से बात करते हैं। अगर उनको कुछ कहा जाए तो फिर वो उल्टा सीधा और बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं। सर यही फैमिली पे भी असर पड़ता है, जब घर लेट पहुँचते हैं या फिर स्कूल में लेट पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर हमारी एब्सेंट लगा दी जाती है, और घर पे लेट पहुँचते हैं तो आपको फिर पता ही है फैमिली में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। हमारा कॉलेज का लेक्चर मिस हो जाता है, डेली लेट पहुँचता है, हमारा कोई मतलब गवर्नमेंट कोई हेल्प ही नहीं कर रही हमारी। The problems plaguing the suburban railway service are many, but experts and people point out the solutions as well. जो हमारी suburban railway है, the thing is that it has not been linked with the upcoming work centers. For example, we are talking about logistic centers, integrated freight complexes, wholesale markets, etc. So my view is that all these kind of activities should be located along the ring railway. The second thing is that ring railway should link with the metro system, and the ring railway and the metro means the track should be same. हमारी लोकल ट्रेनों को चलाने की कृपा करें, और जो 2-3 एक्सप्रेस हमारी पहले चलती थी उनको दोबारा से बहाल करके इन लोगों को जो है सहूलियत दी जाए। तो लेडीज़ की सुरक्षा के लिए जैसे पहले इसमें लेडीज़ डब्बे में महिला पुलिस होती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि वो लेडीज़ पुलिस होती नहीं है उसमें, तो इसी वजह से ही उनके साथ ज़्यादा बदतमीजी होती है। Apart from the suburban railways, Delhi also had an intra-city rail service that began in 1975 to service goods. But it was during the Asian Games in 1982 that the service began its full-fledged passenger operations. The service started from Hazrat Nizamuddin station and covered 21 stations before concluding at its point of inception. After the COVID-19 pandemic, this service was unceremoniously shut down. It was always in loss, and also the ridership was not very high, and it is also creating some problems with the capacity, because now the long distance trains are extensively running between Delhi and other cities, so they occupy the space right of way of the railways. So practically they have not been encouraging this. For Dayaram Dwivedi, there is still value that can be extracted from the revival of the ring railways. उसे दोबारा चलाया जा सकता है, जैसे कई ट्रेनें हैं घुमा के ले जाते हैं, तो इसलिए सारे स्टेशन भी चालू किए जाए, क्योंकि कम से कम 10,000 आदमी उसमें डेली चल सकता है। But he also recognizes the problems that go beyond the scope of the railways. अब बीच में लूटपाट होती थी, क्योंकि ऐसे स्टेशन वहाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ गाड़ी रुकती थी, वो सामान लेके मोबाइल लेके कुछ लेके भाग जाते थे। The divisional railway manager in an interview with Down to Earth said that the freight trains are at 131% capacity of the network. And to ease the congestion, more tracks have to be laid.
but encroachment along stations prevents the railways from doing so. A station master, on the assurance of anonymity, told Down to Earth that if people really wanted the service back, they would have agitated, but rather they acquiesced. For the foreseeable future, the Ring Railway is not coming back. Delhi, paradoxically, is a city that has aggressively pursued pollution control measures. All commercial vehicles run on clean energy, the metro keeps expanding, and almost all the buses are electric. But still, the city is among the world's most polluted capitals. According to a 2018 study, vehicular emissions contribute to almost 50% of the daily overall pollution from local sources in Delhi. For the year 2024-25, Delhi added 187,000 cars to its streets, which means 513 cars per day. The Delhi Metro is an environmentally friendly mode of transportation, but it is expensive. A minimum recharge on the smart card is Rs 200, whereas a monthly pass for the Suburban railways is Rs 375. DTC's electric bus push is cheaper than the metro, but its monthly pass is almost twice that of the Suburban railway pass at Rs 800 per month. With the advent of the metro, the heyday of the Delhi Suburban railways is gone. But if it is revived, improved and integrated with other forms of transportation, it will not only make the public transport of the city robust, but will also significantly help reduce private vehicles on Delhi's congested roads.